Welcome back, class 10 students of ICSE board. Today we will do Act 2, Scene 7. The scene starts at Belmont, a room in Portia's house. सीन जो है बेलमेंट में है, पोर्शिया के घर का एक कमरा है. Flourishing of cornets enter Portia and with the Prince of Morocco and the trains. So enter Portia with the sounding of cornets. Cornets are musical instrument, and Portia, Prince of Morocco with the trains, mean the attendants. Prince of Morocco अपने attendants के साथ Portia के साथ आ रहा है और बहुत से बाजे बज रहे हैं. Portia to the maid. Portia is talking to her maid. अपने maid से बात कर रही. Go draw aside the curtains. Pull the curtains. Draw them aside and discover. Discover means reveal the several caskets to this noble prince, and show the different caskets. The caskets which were provided by her father to the noble prince. Who is the noble prince? Prince of Morocco is the noble prince. And now you make your choice. So she offers him to make a choice. अब पोर्शिया कहती है कि कर्टन्स हटा दो और कास्केट दिखाओ इन प्रिंस ऑफ मोरक्को को, और ये इन अपनी चॉइस बताएं क्या है. मोरक्को, अ प्रिंस ऑफ मोरक्को स्पीकिंग. द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु दिस इंस्क्रिप्शन बियर. हु मीन्स विच. द फर्स्ट इज मेड अप ऑफ गोल्ड. द फर्स्ट कास्केट मेड अप ऑफ गोल्ड एंड हैज़ द फॉलोइंग राइटिंग ऑन इट. इंस्क्रिप्शन मीन्स राइटिंग ऑन इट. हु चूजेस मी shall gain what many men desire. So it was written on that casket that whosoever is going to choose me will gain what many men desire in the world. The second casket, the silver one, which this promise carries, which has an inscription, who chooses me shall get as much as he deserves. The one who is going to choose me, it was written on the silver casket, the one who is going to choose me will get what as much as he deserves. The third, the dull one. The dull is lead because the lead is inferior to, in comparison, gold and silver. So he called it a dull one. With warning all as blunt, and it's warning written there, but it is, the warning is also as dull as the casket. Who chooses me must give an hazard. Hazard means risk. The one who is going to choose me will give and risk all he had. What all he is having, he is going to risk it. How shall I know if I do choose the right? So he is wondering which casket to choose. अब मोरक्को जो है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, वो उसने देखता है 3 कास्केट हैं, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का, लेड का. गोल्ड वाले के पास जाता, उस पर लिखा था जो मुझे चुनेगा, और उसको वो मिलेगा जो बहुत तो इच्छा रखते हैं जिसको पाने की. सिल्वर पे लिखा था कि जो मुझे चुनेगा और वो जितना डिज़र्व करता है उतना ही उसको मिलेगा. तीसरे पे लिखा था, तीसरे को डल कहता है, क्योंकि वो लेड जो है वो उस सोने और चांदी से कम उसकी कीमत होती है. और कहता उस पर डल वार्निंग भी लिखी थी, चेतावनी लिखी थी, जो मुझे चुनेगा उसको सब कुछ देना पड़ेगा और सब कुछ रिस्क उसको बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी. अब कहता मैं कौन सा कास्केट चुनूँ. पोर्शिया एडवाइजेज हिम, द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर. Prince, if you choose that, then I am yours. You can get me as your wife. So she said that if you choose the right casket, in one of the casket my picture is there, and if you get that casket in which my picture is there, you can have me as your wife. अगर तुम वो casket चुन लो जिसमें मेरी तस्वीर है, तो तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में पा सकते हो. मोरक्को अब फिर बोलता है, some God direct my judgment, let me see. May some God direct me. It means may some God help me to choose the right casket. I will survey. Survey means examine the inscription back again. I'll go through the inscription again. What says this leaden casket? So what's there in that casket that is made of lead? Who chooses me give and hazard all he had. So he again reading the same inscription which were written on the casket. He started this time with the lead one. Remember earlier it started with the golden one. Who chooses me is going to risk and give everything that he has. Must give for what? So he questioned himself. Here he questioned himself that one must give everything for whom? For lead. Means it's written there, one who chooses me is going to risk everything. So he is wondering, he is pondering that what are people going to risk
everything for this lead casket. Hazard for less means take risk for this lead casket. It's no use taking risk for lead. These casket threatens me, that all men that hazard all. So here he is saying that these casket, what's written on this casket, I am totally scared of this, what's written there, men that hazard all, the person who is going to risk everything, do it in a hope of fair advantage, a considerable advantage. The one who is going to risk everything is going to do for some advantage. Definitely if you are going to risk something, you definitely need a good profit for that. A golden mind stoops not to show off dross, means a noble mind. He considered himself noble, and he said that a noble mind stoops, bends not to show off dross, means a noble mind does not degrade itself and stoops low. The one who is noble does not have to bend low or come down below his status. अब यहाँ पे कह रहा है वो कि जो वो तीनों कास्केट को फिर से पढ़ता है, इस बार वो शुरुआत करता है लेड कास्केट से, और वो कहता है कि उस पर लिखा है कि जो मुझे चुनेगा वो अपनी सारी चीज़ रिस्क कर देगा। तो इधर रिस्क किस लिए करना, इस लेड कास्केट के लिए। और जो आदमी नोबल होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो बड़े विद्वान होते हैं, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने स्टेटस से नीचे नहीं आते। और मैं एक विद्वान व्यक्ति हूँ, मैं बहुत गुणी व्यक्ति हूँ, और मैं क्यों ये लेड का कास्केट चुनूँ। I will then nor give nor hazard aught for lead, so I am not going to risk anything for this lead casket। तो उसने कहा मैं लेड कास्केट के लिए कुछ रिस्क नहीं लूँगा, बेकार है इसको, अगर इसको जीत भी लिया तो लेड ही का तो कास्केट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम इट, दैट एवरीबडी वाज वरीड अबाउट द आउटर अपीयरेंस। आउटर अपीयरेंस मीन्स गोल्ड, silver, they are more precious in comparison, gold is more precious in comparison to silver, and if you compare silver and lead, silver is more precious. So everybody is going for outer appearance, and what was in fact Portia's father was quite a witty person, वो बहुत ही विटी थे, विद्वान, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये रखा था। सब लोग बाहरी चमक पे जा रहे थे। What says the silver with her virgin hue, means hue means white color, and he said that what silver says with its white color। अब सिल्वर वाला कास्केट क्या कहता है, अपने सफ़ेद रंग के साथ, who chooses me shall get as much as he deserves। It's written that who is going to choose me will get what all he deserves, as much as he deserves। Again a question, again he asked a question. So we can see that he was a bit suspicious also, and we can consider him intelligent also. For everything he was rational. He had some, he always thought before choosing something, as much as he deserves। Pause there, Morocco, hold on, Morocco, and weigh my value and weigh thy value with an even hand। So I am going to judge my value with an impartial way. I am going to judge my value. So he is going to judge himself. If thou be rated by thy estimation, if I am going to, if you are going to value me with the right valuation, thou does deserve enough. So in that case I deserve more. I deserve more than silver. First lead he refused because he finally thought that this lead is inferior to him, and even silver he considered himself in a better position rather than to go for silver. And yet enough may not extend so far as to lady, and what enough may not be as much as to win this fair lady। अब वहाँ पे वो कह रहा है कि वो लेड वाले को कह देता है, छोड़ देता है, वो सिल्वर वाले को ढूंढता है, देखता है, उस पर लिखा था कि वो हु चूजेस मी शैल गेट व्हाट ही वन डिजर्व्स। तो कहता है मैं तो बहुत डिजर्व करता हूँ, मेरी कीमत बहुत ज़्यादा है, मैं जितना विद्वान हूँ, उतना वीर हूँ, तो मेरी कीमत इतनी थोड़ी होएगी। तो मैं तो, और जब मेरी कीमत ज़्यादा है तो मैं डिज़र्व भी ज़्यादा कर रहा हूँगा। तो मेरे लिए कि ये मुझे नहीं लगता ये ठीक है कि मैं सिल्वर का कास्केट चुनूँ और पोर्शिया को पालूँ। And yet to be afraid of my deserving, and yet I am afraid of my deserving of my worth, but where but a weak disabling of myself। So this is a poor valuation. If I go for a silver one, it's definitely a poor valuation for me. I am much more superior than the lead and silver casket। तो वो कहता है अगर मेरी वैल्यूएशन दिया तो बहुत ही कम वैल्यूएशन मेरी लगाई गई है, मैं बहुत ही सुपीरियर हूँ, ना मैं लेड की कैटेगरी में आता हूँ, ना मैं सिल्वर की कैटेगरी में आ रहा हूँ। As much as I deserve, why that's the lady I do in birth deserve। So this lady I deserve because of my royal birth।
आई एम अ प्रिंस and in fortune. So I deserve her because of my royal birth and because of the wealth, my position, my culture, my virtues and my upbringing. So in fact now we'll take what we get from this, that he is very proud of his achievement. So he said that because of my royal birth, because of my wealth, because of my position, because of my virtues and because of my upbringing, I deserve more than that, and because I have all these things, so I am the perfect person to have Portia as my wife. अब वो कहता है मेरा जन्म एक रॉयल ख़ानदान में हुआ, राष्ट्रीय परिवार हुआ, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ, मेरे अंदर अच्छाइयाँ बहुत हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो इसका और मैं तो टोटली डिजर्व करता हूँ पोर्शिया को। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि वो थोड़ा सा वो अपने उस पर उसको अपनी चीज़ों पे अभिमान है। इन ग्रेस एंड इन क्वालिटीज ऑफ ब्रीडिंग, एज आई टोल्ड यू, इन ग्रेस मीन्स लाइक his virtues and the qualities of his upbringing, but more than these, in love I do deserve. And if you compare me with the love, I love Portia more than anyone else in the world, और मैं Portia को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। What if I strayed no further? What if I don't go any further? I stop myself here, means I don't go for a golden one, but choose here. If I make a final decision, instead of going further, I make a final decision and I choose the silver casket. Let's see once more this saying graved, means what graved means inscribed, what is inscribed on it, what is written on it. कहता है अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो देखो क्या होता है, और फिर भी मैं जाता हूँ आगे और मैं देखता हूँ उस रीडिंग को दोबारा पढ़ता हूँ, उसका क्या मतलब है। Who chooses me shall gain what man desires. तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसको सिल्वर कास्केट पर उसका मन आ गया था, और इसका मतलब ये भी होता है कि वो अपने आप को कंसिडर नहीं करता था गोल्ड के लिए। वो कहता तो था लेकिन कहीं ना कहीं उसका मतलब था वो सिल्वर के लिए ही सीमित है। कई बार हम लोग अपनी तारीफ बहुत करते हैं, लेकिन इफ़ यू नो योरसेल्फ, अगर हम लोग अपने आप को समझते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसी के लिए ठीक हैं। फॉर द फोर वाई दैट्स द लेडी ऑल द वर्ल्ड डिजायर, तो इसे वही तो वो लेडी है जिसको पूरी दुनिया डिजायर करती है। फ्रॉम द ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड दे कम टू किस दिस श्राइन, श्राइन इज द टेम्पल, that's Balmont, the house of Portia, this mortal breathing saint, and this mortal breathing saint is Portia. तो वो कह रहा है यहाँ पे दुनिया भर के लोग इस धार्मिक जगह पे आए जो उसने बेलमेंट के लिए कहा है, पोर्शिया के घर के लिए, और उस सेंट को पाने के लिए, उस पोर्शिया को। तो पोर्शिया के लिए उसके मन में बहुत रिगार्ड भी था, बहुत प्यार भी था। They have in England a coin that bears the figure of an angel. Now he says there's a coin in England, they have a gold coin which has the figure of an angel carved and stamped over its outer surface. Stamped in gold, but that inscription is engraved on the outer side. So here he says कि जो एक इंग्लैंड में सिक्का है सोने का और उस पर जो इंस्क्रिप्शन है जो बना हुआ, जो पिक्चर बनी है वो आउटर सरफेस पे है। बट हियर एन एंजल इन अ गोल्डन बेड लाइज ऑल विद इन, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है जो अब गोल्डन कास्केट पे आ गया उसको पढ़ रहा है और कह रहा है कि एक सिक्का है इंग्लैंड में जो जिसपे जो तस्वीर बनी है वो बाहर दिखती है, लेकिन जो ये गोल्डन कास्केट है इसमें जो तस्वीर है वो अंदर है, इसलिए मैं गोल्डन कास्केट को चुनूंगा। डिलीवर मी द की, मुझे चाबी दो, हियर डू आई चूज, और मैं इसको अपनी ये कास्केट मैं चुनता। तो फाइनली इज गोइंग ही चूजेस द गोल्डन कास्केट and thrive as I may, and I'm going to take a chance, Portia, there take it prince, and in my form lies there. वो कहती Portia, then take it, if my portrait is inside you can have me as your wife. He unlocks the golden casket, वो golden casket को unlock करता है। Morocco, oh hell, and when after opening the casket he feels dejected and he gives a cry, a shrill cry, oh hell, what have we here? वो कहता है इसमें क्या पड़ा हुआ है। A carry on death means a fleshless skull, एक skeleton पड़ा हुआ है, within whose empty eyes, and in the empty eyes of that means empty eyes means hollow eyes, there is a written scroll, there is a paper which is rolled and something written on the paper. Now I am going to read the paper. This is what he said. Now he starts reading the paper. उससे एक उसमें उसकी आंखों के अंदर एक कागज पड़ा होता है, वो कहता है वो निकालता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड, मेनी ए मैन हिज लाइफ हैथ सोल्ड, बट माई आउटसाइड बी होल्ड।
सो इट्स रिटन दैट, बट बहुत से लोगों ने, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, बहुत सारे लोगों ने, ये बहुत पुरानी कहावत है, और बहुत सारे लोगों ने अपना जो है, जो इस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, चमकती हुई चीज़ के लिए, आउटर अपीयरेंस के लिए, और उन्होंने अपनी लाइफ का सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। गिल्डेड टॉम्स टू वार्म इनफोल्ड, गिल्डेड मीन जो सोने से मड़े होते हैं, टॉम्स जो मकबरे होते हैं, और इनफोल्ड मीन इनक्लोज्ड, हैड you been as wise as bold. So you were as you, if you had been as wise as you are bold, so here it was written that you are bold enough, but you are not as wise in comparison. You are young in limbs and you are like a young person in judgment old, but you did not go for the right judgment. It's an old judgment that all that glitters is not gold. तुमने सही फैसला नहीं किया. Your answer had not been inscribed. If you have taken the right, chosen the right casket, your answer, you would have not got the answer in such a form. You would have got the picture of Portia. अगर आपने सही कास्केट ढूंढा होता तो आपको ये आंसर ना मिलता, आपको पोर्शिया की पिक्चर मिलती. Farewell you will, your suit is cold, and now you farewell, you go from here. Now your hopes are dead. Cold indeed, तुम्हारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, खत्म हो, बिल्कुल तुम डिसअपॉइंटेड हो गए हो, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई है. Then farewell heat, और जो अब तुम यहाँ से जाओ, अब बिल्कुल तुम्हारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो रही. एंड वेलकम फ्रॉस्ट, एंड जो तुम्हारी गरम गरम होप थी, होप मतलब गरम मतलब होता स्फूर्तिदायक, जो आपके अंदर इंथुजियाज्म था वो ख़त्म हो गया. अब आप बिल्कुल ठंडे हो गए, डिस्पेयर मतलब एक होपलेस व्यक्ति हो गए. पोर्शिया, अड्यू मीन्स फेयरवेल. आई हैव टू ग्रीव्ड अ हार्ट टू अ टीडियस लीव दस लूजर्स अपार्ट. माई हार्ट इज़ टू हैवी with grief to permit me to take a long ceremonial leave. So this is Morocco speaking, and he said, Portia, I am going there, my heart is too heavy to take a tedious, a formal leave, and thus I depart. वो कहता मेरा दिल बहुत भारी है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं यहाँ से फाइनली जा रहा हूँ, मैं आपसे लीव लेने आऊँ. Exit with this train, flourish of cornets. अब वो अपने सारे अटेंडेंट साथ चला जाता, फिर से बाजे बजने लगते हैं. Portia, a gentle radiance, a gentle escape, a final way, I've got rid of this person. Draw the curtains, now put the curtains on. Go, let all his complexions choose me so. So may every other suitor also choose me like this, and they go for the wrong casket, and I'll be safe for Bassanio. तो वो कहती है हर जो आदमी आया वो गलत कास्केट चुन ले, और मैं जिससे शादी करना चाहते मेरी शादी उससे हो जाए. So that was scene 7 of Act 2. In the next video, we'll do scene 8. Till then, goodbye. Subscribe the channel, press the bell icon, and share it with your friends. Thank you.